आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द कॉन्करेंट इंजीनियरिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय इन्वॉल्विंग ए क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर डिज़ाइन प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल वर्क। तो क्या है, लॉन्ग बिफोर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, among the effects of design specification of the cost, which one of the following is the most significant that influence the प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ इन प्रोडक्ट? तो क्या, लार्ज टॉलरेंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर प्रिवेंट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटीज? तो क्या होता है, कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट हुज प्रोडक्शन इन्वॉल्व द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट डिजाइन, that forms of design which deal with improving the appeal of a product to the human sense. Industrial design, this step in engineering design process involves decision making, evaluation, valuation, ठीक है, valuation, sorry, that phase of the design which include modeling and simulation, configuration design. The method for generating mechanism for a machine to get a desired output for a given input is known as synthesis. In a design process, that process which should be followed after the selection for material, determining mode of failure. The simplicity to operate and easy to understand a product is concerned with its following aspect: functional aspect. Dash is useful contributor to a strategy of mass customization modular design. One of the disadvantages of standardization is early freezing of product design. The name which is most closely associated with robust design, Tagochal. The term voice of customer is associated with quality function deployment. Service design often differs from different design for which one of these consideration: customer interference, the ability of a product part or service to perform its intended function under an appropriate set of conditions, is robustness. Production design and manufacturing personnel being together early in the design process is called concurrent engineering. Steps involved in reverse engineering process are prediction, observation, dissembles, analyze, test, documentation. The primary stage of production planning is product development and design. Nemography stands for graphical representation of mathematical law. Product design specification is done at the stage of problem definition. Types of design in which a known solution is adopted to satisfy a different need is called adaptive design. Problem definition and information gathering. देखते हैं इसमें question. It is important to carefully identify the needs and expectation of customer period to begin the design of mechanical device. One of the step is formulate usually quantitative statement to expect performance level, environmental condition in which the device must operate, limitation on space or weight or available material and component that may be used. These are part of which one of the following elements of design, which is a design requirement. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज कस्टमर फीडबैक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ए सर्विसबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज ease with which a product can maintain. Comparison of identical practice, same or outside industry, is known as functional benchmarking. Generic benchmarking is unrelated business process or function that can be practiced in the same way regardless of industry. Th- that method of benchmarking which is most cost efficient, internet benchmarking. Reverse engineering could be used in concept generation part of the design process. The house of quality is best described as set of metrics used in conjunction and quality function deployment. Design of manufacturing and assembled is an example of concurrent engineering. The quality function of deployment process began with customer wants and need.
The aspect of product which is concerned with the ease and efficiently of product performance functional aspect. That method which is associated with parallel design concurrent engineering according to Kono's categorization of customer requirement. Which of the following will not make customer unhappy if missing it product exciters? अगला देखते हैं which of the following factor is included in product realization process. First, marketing function to assess customer requirement. Second, documentation of the design. Third, legal requirement. Hence all of the options are correct. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 steps involved in creative thinking process is perception, incubation, inspiration, verification. Insufficient knowledge, incorrect information, and memory block are belonging to which type of barrier to create thinking? Intellectual block. During the concept generation, associating hits or liar body which device of the process under consideration is called personal analogy. The correct sequence of design is identification of problem, generate feasible solution, detailing of solution, revision of solution. Optimization solution is of a problem is the solution which satisfy all constraint. Analysis and selection is solution. Which one of the following is not the way of estimating the statistical parameters and is integral part of analysis or synthesis task when probability of failure is involved? Then propagation of weight. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. इन डिस्कशन मेकिंग मॉडल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स आर अननोन डिसीजन अंडर रिस्क. The first stage of PUG model is choose the criteria for concept evolution. Concept generation is dash process divergent. A method of solving multi-criteria design problem is analytical heuristic. The essential component decision making objective and constraint. Consider the following non-industry performance measure of automobile industry related object: fuel efficiency, economic efficiency, quality of rigid emission, which is a D. 2, third and fourth option are correct. The manufacturing cost of the component will decrease as the result of using the probabilistic relationship because third, manufacturing cost decrease as the tolerance on the quality characteristics increase. Which of the following statements are correct for portable step ladder used on working platform to gain height above the protected edge? गलत है. Used in a fully open position सही है. Should be length that ensure a person's feet are not positioned and higher than the second top ring. Hence, third is correct. Hence, option A, 2 and third are correct. The design of highway interchange involves the application of geometry of क्या होता है hyperbola I think. ठीक है. Sorry, circular arc, circle arc. ठीक है. अगला देखते हैं हम. The creative design routes are practiced by adopting following step: concentration, elimination, preparation, verification, incubation. तो hence सबसे पहला होता है preparation, फिर then होता है concentration, फिर then होता है incubation and फिर after the illumination and फिर verification. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. इन ए डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्ट the exact dimension and tolerance could be established during parametric design phase. That type of modularity which exists when a family of dissimilar product use the same assembly or component sharing modularity. The design which is concerned with the visual appearance of the product is called industrial design. That type of prototyping method there is no need to making the model to look like the product in size proof of concept prototype. That method which produce prototype directly from CAD model rapid prototype. That rapid prototyping process which is more suitable for making prototype of large component. Eliminated project modeling. The lowest level in the hierarchy of the design process is concept generation. What does X stand for? The DEFX performance measure.
that forms which is limitation in engineering design process, aesthetic, safety, reliability. In a parametric modeling system, relation between sketch entries is defined as constraint. Allow the designer to conceptualize object more easy without making costly model prototype CAD. Allow the performance of structure to analyze and tested efficiently, accurately, and quickly. Computer-aided engineering. The basis series of perform number are R5, R10, R20, R40, and R80. Step-by-step approach for identify all possible feature in design is called FMEA. Arrangement of physical element of a product to carry out its requirement function is called product and architecture. डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ते हैं। तो 12 पीस ऑफ कॉपर ओरिजिनली 305 लॉन्ग, तो आपको यल की वैल्यू दे रखा हुआ है जो 305 लॉन्ग है। ठीक है। टेंशन, तो आपका टेंशन स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस है आपका जो है 276 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन और न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है। अब डिफॉर्मेशन पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इलोंगेशन, तो आपको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है। एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है। तो स्ट्रेस पता है हमको, तो स्ट्रेन को हम ब्रेक कर लेते हैं डेल्टा एल बाई एल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई। ठीक है। डेल्टा एल यहाँ से निकालना आपको, तो डेल्टा एल निकालने के लिए आपको स्ट्रेस इंटू एल बाई ई। ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू 276 इंटू 305 डिवाइड बाई 100। तो ये कॉपर है, कॉपर का आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होगा, तो आप रख करके आपका आ जाएगा 0.77 ठीक है। सी ऑप्शन के बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड इफ द कोल्ड वर्क। ठीक है। तो इसमें आपको पता है परसेंटेज कोल्ड वर्क निकाल के इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया अपन इनिशियल एरिया इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। तो पाई बाई 15.2/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 12.2/2 का होल स्क्वायर बाई पाई इंटू 15.2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे, आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 35.77% के आसपास। सॉरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आया है इसमें 7% नहीं आएगा, बट आएगा 35.6 पर, बस आंसर उन्होंने 7% मान रखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है स्पीड दिया व्हीकल ऑफ स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, और रेडियस ऑफ व्हील दिया हुआ है आपको। ठीक है। जी की वैल्यू दिया, टॉर्क की वैल्यू, तो आपको पता है v इज इक्वल टू पाई टी एन बाई 60। ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है। फिर इंजन रोटेशनल वेलोसिटी होता है ओवरऑल गियर रेशियो इंटू व्हील रोटेटिंग वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे आप आपने व्हील रोटेटिंग वेलोसिटी निकाली हुई है, और जी की वैल्यू यहाँ पे आपको 19.915 दे रखा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके इंजन रोटेटिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर इंजन पावर निकालनी है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है। करके कर लेंगे। तो इंजन पावर आपको 2 पाई एन टी बाई 60 कर लेंगे। एन की वैल्यू हमने निकाल रखा है, टी की वैल्यू यहाँ पे टॉर्क। ठीक है। तो टॉर्क आपको पता है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, गिवन है। ठीक है। तो रख के आप यहाँ से इंजन पावर निकाल लेंगे, और यही हमसे पूछ रखा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कैंटिलीवर बीम ए बी सी सोन टू ए हाईली एक्सग्रेटेड वर्टिकल स्केल हॉरिजॉन्टली ए बी इज 2 मीटर लॉन्ग एंड बी सी 0.6 मीटर लॉन्ग. Load acts only in the region AB and there are no loads in the region BC. Under this load system, the deflection at B is 0.24 centimeter and slope of the beam at B is theta, where sin theta is 0.038. What is the deflection at D, which is midway between B and C? ठीक है। B और C के बीच में आपसे पूछा हुआ। ठीक है। तो आपको पता है डिफ्लेक्शन एट डी, तो डिफ्लेक्शन एट डी निकालने का डिफ्लेक्शन एट बी जो दिया हुआ है आपको वो वैल्यू, और थीटा एट बी इंटू बी डी का जो
लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट बी आपको 0.24 मीटर दे रखा है, और जो थीटा एट बी 0.038 दे रखा है। तो टोटल लेंथ 0.6 है, मीट पे पूछा बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन एट टी आपसे निकल जाएगा इजिली। आगे बढ़ते हैं। A clutch has the transmit 200 Newton meter of a torque assuming uniform pressure theory and the ratio of outer to inner radii is 2.5. What are the radii for a uniform pressure of 2 megapascal with the coefficient of friction of the linear material being 0.4? तो हो जाएगा 20 mm and 50 mm, ठीक है। Consider the following statement regarding golden ratio for positive integer. It is the ratio of difference of two numbers and the smaller number. It is the ratio of sum of two numbers and the smaller number. It is the ratio of sum of two number and the larger number. Hence, only option 3, the ratio of sum of two number and the larger number. आगे देखते हैं। A height of 240 Newton is dropped on a closed colloid hemical spring made up of 18 mm spring steel wire. The spring consists of 22 coils wound to a diameter of 180 mm. If the instantaneous compression is 120 mm, what is the height of drop of the weight given G is equal to 88 in 10 power 3 Newton per mm square. Weight दे रखा है, D दे रखा है न्यूटन, R radius of main coil 90 mm, इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन डेल्टा 120 mm, जी इतना देखा है न्यूटन, ठीक है। 240 न्यूटन का वेट हम इस पे ये हमारा हाइट इंस्टेंटेनियस ड्रॉप हाइट, ठीक है। ये हाइट से ये स्प्रिंग कंप्रेशन इतना डेल्टा मान लीजिए हो रहा है, ठीक है। तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर एम जी डेल्टा जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी, हाफ W1 डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से आप करके आप यहाँ से W की एच हाइट निकालोगे 150 mm आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding V belt drive. The groove angle of the sieve is less than the belt section. The efficiency of V belt drive is higher than that flat belt drive. तो आगे, and the groove angle is so made of the belt wedge in the groove. तो hence 1 and 3rd options are correct. आगे देखते हैं। A rod of length L, cross section area A and model's velocity G1 has been placed inside a tube length L. The cross section area A2 and the modulus velocity G2 and the two are firmly held by ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा कि ये होता है P A1 E1 अपन A1 E1 प्लस A2 E2, दूसरा P इक्वल टू A2 E2, तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। Which one of the following make the design, assembly and operation of complex system feasible and practical? तो आपको पता है मॉड्यूलराइजेशन। What are the function of एक्सेल, ठीक है। एक्सेल का फंक्शन क्या है? सपोर्ट द वेट, ट्रांसफर द फ्रॉम द हाउसिंग ऑफ द व्हील, अलाउ रोटेशन ऑफ, आई थिंक डी होगा, ठीक है। देख लेते हैं, डी होगा, ठीक है। फैक्टर विच गवर्न द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर, तो क्या है? परचेज परचेज प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ड्यू टू रेगुलर यूज, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, लिफ्ट एंड एक्सटर्नल staircase are provided with access from the lobby area of each floor in multi-story blocks. The external staircase must be accessible through self-closing 180-degree swing unlocked door which provision for locking at appropriate conditions. सही है। Such staircase should not be inadvertently subjected to spreading of smoke but must at provide inherent exit from the lobby of each floor, hence it is the correct hence option A is correct, ठीक है। आगे देख लेते हैं। A plan view at just below window sill level but not showing door opening is shown of an outpost building of say the forest department section A extending
just a little above ground level. Fully below ground level is shown the wall and first footing area of random rubble masonry in cement mortar, and the lowest part of the foundation of mass rubble in cement mortar. The total volume of the 40 centimeter deep footpath whole बिल्डिंग इज नियरली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करके 3.3 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन डायमेंशन आर specified from a common origin and spaced parallel to one another is called progressive dimensioning. The length to width ratio of standard size drawing sheet is root 2 s to 1. Dash is used to make measurement in one unit system from a drawing in another unit system measurement. Comparative scale. Replacement of protractron is used as a scale of chord. The edge of drawing board on which T square is made to slide is called its working edge. For drawing thin lines of uniform thickness, the pencil should be sharpened in the form of chisel edge. That line which is used to show the outline of part continuous thick line. If the radius of generation of circle is 20 degrees, 20% of the radius of directing circle, then the number of episoidal formed for the complete revolution generating circle will be 5. That curve which represents the Boyle's law rectangular hyperbola. Prime unit of measurement for engineering drawing and design in the mechanical industry is millimeter. Dash set of lead grade has the grade out of sequence 4BHF3H. Terminal method is used to draw ellipse. In the context of logarithmic spherical consecutive radii are in geometrical progression. The type of line which is part of dimensioning extension line. When the diameter of directing circle is twice the diameter of generating circle, when the hypoidal will be circle with infinite radius. In the context of the spiral curve, the distance from any point on the curve to the pole is radius vector. In unidirectional method, dimensions are placed in only horizontal direction. A circle passes through three given points. Its center lies in the intersection of perpendicular bisection of the line that connect the point. Part of circle bounded by two radii meeting at center and enclosed by arc is called sector. Section lines are continuous. Dash line are drawn at an angle of dash to the main outline of section thick and 45 degree. Locus traced by a point around the surface of right circular cylinder in such a way that the axial distance is uniform and its movement around the surface helix. The surface area of basic AO side drawing sheet is nearly 1 meter cube. That compass which is used to draw large size circle lengthening bar. The two parts of T square are co-head and blade. The scale is a chord is used to measure angle. Cabinet projection part of opaque. A room of 1728 meter cube volume is represented by cube on drawing which a representative factor 0.5. The volume of cube is 216 meter cube. When measurement is required in 3 unit scale is used diagonal. If the diameter of directing circle is equal to diameter of generating circle, when ellipsoidal will be logarithmic. Curve generated by point on the circumference of tire of cycle is sinusoidal. The instrument which is free from of a error screw gauge. That drive which reduce shocks and vibration transfer during power transmission belt driver. The ergonomics in related to human comfort and safety. That belt drive which is used with shaft arranged parallel and rotating in opposite direction cross belt driver. When the driving shaft is running at constant speed, then for changing the speed of driven shaft which pulley should be used, stepped or cone pulley. The intermediate power transmission should be used for fast and loosely pulley drive. That types of belt should be used for very large power transmission over a large distance circular belt. That belt which is widely used in variable speed drive V belt. Coefficient of
Friction between belt and pulley depends upon material of belt, material of pulley, slip of belt, speed of belt. That clutch which is known as wet clutch, multi-clutch, multi-plate clutch. That clutch which is positive clutch, spherical jaw clutch. Crowning of pulley is done to avoid slipping of belt. Included angle U between two adjacent flank of AM thread is 29 डिग्री। ठीक है, अब हम जो बाकी है पार्ट 2 में अब हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।